Recently, she's been uploading adorable couple content and wedding pictures, जिसकी वजह से I have fallen in love with her. So let's not keep you guessing and welcome Sirha Asghar. Dance shoots या acting shoots? I prefer acting. I like acting. मैंने एक वीडियो देखी आप लोगों की जिसमें आप लोगों ने heels पहन के डांस किया. Yes. How do you do that? If you know your heel and you know what you're comfortable with, you can dance in it. जो मुंह में आए बोल दो. अच्छा नहीं, I don't know. When you become a mom, ठीक है, 5 सेकंड पहले किसने आपसे क्या बात की होगी आप वो भी भूल जाएंगे. No I'm way. not even kidding. It's a mom brain. ये क्या यार? नहीं इसकी दो में गंदी सी दो में ना. Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome back to another fun episode of Samsung Presents Girls Only. I hope आप लोगों को भी इस एपिसोड का उतना ही इंतजार होगा जितना मुझे अपने नेक्स्ट गेस्ट को इंटरव्यू करने का है. लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हेयर स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं. आज का जो हेयर स्टाइल है वो काफी मिनिमलिस्टिक सा होगा और ऐसा होगा जो इजीली इवॉल्व भी हो जाए. लेकिन उस इवॉल्व होने के लिए आपको एपिसोड के एंड तक इंतजार करना पड़ेगा और मुझे पता है आप लोग करेंगे. Alright, और उसके लिए मुझे साइमा की हेल्प चाहिए होगी, तो साइमा को बुलाते हैं. साइमा आ जाओ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. करें बात? Yes. Okay, so हमने आज एक मिनिमलिस्टिक सा हेयर स्टाइल बनाना है, राइट? Actually, हेयर स्टाइल के लिए सबसे जरूरी होते हैं थिक बाल, जो कि आपके हैं. कहते हैं ना, जब बाल हो थिक, एनी स्टाइल करो थिक. I use Sunsilk thick and long for all day evolving hairstyles. We're done. We Now are? Tell me, did you like it? I love the hairstyle. It's very demure, very mindful. Thank you so much, Saima. I love my hair. Thank you. Bye. Bye bye. Alright guys, so now it is time to invite our next guest of the show. I am super excited, so let's go. So coming to the star of our show, a powerhouse of talent. लोग इनको इनकी versatility की वजह से जानते हैं. चाहे amazing acting हो, great dance steps या comedy skits, she has her audience hooked. Recently, she's been uploading adorable couple content and wedding pictures, जिसकी वजह से I have fallen in love with her. So let's not keep you guessing and welcome Sirha Asghar. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Sirha? I'm good. How are you? So happy to have you on set. I'm good, Likewise. alhamdulillah. अच्छा, पहले तो हम आपके YouTube से बात करते हैं. Yes. YouTube चैनल कब शुरू किया और कैसे? कब शुरू किया ये तो खैर मुझे अब याद नहीं है. आई थिंक इट्स बिन लाइक 4-5 years नाउ. एंड राबिया केम अप विद दिस आइडिया कि हमें कुछ पाकिस्तान के लिए कोई कंटेंट करना चाहिए, लाइक through dance, because we met at a wedding at Okay. Faizan Sheikh's wedding. Okay. And we bonded together there. Oh, that's so We've sweet. never met before that. Oh, Yes. so आप लोगों की friendship भी 4-5 years पहले हुई है. Oh, lovely. We met on a wedding, we danced together, we connected our vibes, and then we was like, यार हम dance अच्छा करते हैं, and we look alike, kind of. Oh, yes, you guys do. So it's like, it was Rabia's idea. She said, why not we do a dance channel and we specifically focus on Pakistani songs. Yeah, because it's never been done before like that. Yes. It's incredible. So we knew कि बहुत ज़्यादा backlash आएगा, but it did not happen that way. And Okay. we got a lot of love. We kept on doing it. Now we don't have time for it because we have kids. Oh my God, that's adorable. Yes. But you still manage to end up doing it kabhi kabhi. Yes, so that's kabhi-kabhi, yes, we incredible. do it. Whenever we like Incredible. get time, we're pumped up. We're just like, okay, we're bored now. We should do something different. Then we Okay. do it. Lovely. मैंने एक वीडियो देखी आप लोगों की जिसमें आप लोगों ने heels पहन के डांस किया. Yes. How do you do that? I think it's easier Yeah. because if you know your heel and you know what you're comfortable with, you can dance in it. True. और अगर आपको आदत है ना उस heel की, Yes. तो I think it becomes a body language. A body language, true. So वो Right. आसान हो जाता है कि heel कोई भी हो, but अपनी कोई heel हो ना. So That makes it easier. Perfect. So what is your favorite dance video or choreography of yours?
I think we've done Dil Se Pakistan. That was a hit, and it's still a hit. I think it has 9 million views or something. No way. Yes. So we practiced a day before. I did all One the day wardrobe. before? Yes, I did a wardrobe one day before. I went to Gulf. We did a lot of shopping. हमने बहुत सारी चीजें की, कोटी वगैरह ये वो. Just one day before, and then my friend came to my house. He's an art director. He directed My Mother's House the way it was. No way. And it was actually a very fun shoot. हमें बहुत मजा आया वो shoot करके because it was so easy. And you're saying कि सारा कुछ एक दिन पहले हुआ है. We always do that. We don't have time कि हम एक हफ्ते पहले करें फिर उसके बाद करें. No, we don't have that much time. Incredible. अच्छा, Sirha, dance shoots या acting shoots? I prefer acting. I like acting. Really? Yeah, dance is like a therapy, but acting is like something I really love. Okay. अच्छा, हमने आपके YouTube channel के बारे में तो बात कर ली. अब थोड़ा सा acting की तरफ आते हैं because I feel like you are more inclined towards that. You did a role of Fajr in Aakhir Kab Tak. Yes. It was amazing. What was the process like? Process was lengthy because I had to audition twice. I had to sit with the director and write about my past. Wow. Yes. So any incident that happened in my life. So it was actually, we built a character like that. So I had to work like a week before, 2 weeks before. Then I had to act scenes twice or thrice before actually we went on set. No way. So that is we a very had to carry a tone, process. a different tone. So I had, like, when I went to audition, so I had to carry 3 tones, 3 different tones, to which we selected one for the character. So you really showed the director your versatility and he was like, ये वाला shade चाहिए. It was a task, but वो carry करना इसलिए आसान था क्योंकि हमने एक go में वो project किया था. There was no gap. Oh, so ये तो सबसे आसान होता है क्योंकि break नहीं आती है and if it's an intense character, then you stay in character and you execute it. So it was easier that way. So how do you feel do you think this character has relatability with our society? Yes, it does actually, because there are a lot of girls who do not talk about it. But now that we are exposing them to such content, they talk about their lives. Lovely. They talk about the incident. They're more stronger. So, and I believe we want more stronger women in society. 100%. That's all what Girls Only is about. Stronger women, uplifting each other and showcasing the problems that need to be talked about. True. Incredible. Now, let's have a healthy moment with Lipton Green Tea. Guys, one of my favorite life-changing hacks is green tea. Honestly, मैंने अपने lifestyle में इसका change genuinely महसूस किया. 2 cups of this green tea are equal to a whole bowl of broccoli. Isn't that the best choice for your wellness? Honestly, इसमें इतने ज़्यादा flavonoids होते हैं that are amazing for your long-term health benefits. They have anti-aging, they boost your energy levels, and they are amazing for your skin. वैसे तो लिप्टन ग्रीन टी के सारे ही फ्लेवर्स मेरे फेवरेट हैं, but this specific one, which is the mixed berry, is my absolute favorite. 2 cups every day for healthy living. ये तो हो गया मेरा green tea moment. Let's get back to Sirha. Sirha, I see you always post cute workout videos. आपकी fitness routine क्या है? I usually, Ihan se pehle used to get up at 7. Oh wow! And when I was expecting, also I used to get up 7 and go to gym. No way! Yes. Wow, that's incredible. Yes. Like मेरे building में लोगों को नहीं पता था I was actually having a baby. No. Until I had a baby. Wow. Yes. That is inspirational. तो मैं सुबह 7 बजे उठती थी. I used to work out and then फिर मैं उसके बाद I used to go to shoot 10 to 10. I was working तब भी. Wow. अब ये है कि because इहान बहुत सारी एनर्जी ले लेता है, बहुत ड्रेन कर देता है, तो जब शूट नहीं होती I wake up at 9:30, I go to gym at 10, I come back at 11, I have breakfast and बस फिर इहान के साथ पूरा दिन उसके टैंट्रम्स देखते हैं हम, उसके नखरे देखते हैं और दिन गुजर जाता है हमारा. So that's the, और उसको देखभाल में खाना भी मिस हो जाता है. No way. So that's the fitness secret actually. Oh, ये fitness है कि इतना busy होती है कि खाने का टाइम नहीं रहता. आपको याद नहीं रहता. Like when you become a mom, ठीक है, 5 सेकंड पहले किसने आपसे क्या बात की होगी आप वो भी भूल जाएंगे. No I'm way. not even kidding. It's a mom brain. Okay, okay, interesting to know. अच्छा, what's your I need to eat everything but still stay healthy routine? अच्छा, अब मुझे नहीं दिल करता कि मैं सब खाऊं. Oh.
I eat, but my appetite has gone small. So मुझे ये नहीं होता. You just said you don't have time to eat even though. तो ये नहीं होगा आज मैं पराठा खाऊंगी, आज मैं ये खाऊंगी, ये नहीं है मेरे से. जब मिल जाए. हाँ मतलब खाऊंगी, मुझे होता है कि अच्छा आज बॉइल्ड चिकन का दिल हो रहा है, आज यखनी का दिल हो रहा है. I'm that boring kind of a foodie. Oh, that's very healthy. We should all take inspiration. And if I have pizza तो सिर्फ ऊपर का खाऊंगी, नीचे का नहीं खाऊंगी. हाँ. That is the first time I've heard someone say that. तो ये bread खाऊंगी, उसके कोने खाऊंगी. Yes, okay. I have all weird kind of food cravings. Wow, I do not want to pause our conversation, लेकिन we have to move on to our plushie segment. अच्छा सिरा, मैं आपको कुछ नाम दूंगी और आपने मुझे बताना है कि do you think they're an amazing actor या तो there's room for improvement. ठीक है? So the pink side, the happy side is we love them, and the blue sad side is room for improvement. Okay. So we have our plushie. Yes. First name is Rabia Kulsum, of course. Mariam Nafis, Mansha Pasha, Hajra Yamin. You're naming all brilliant actors. I mean, all brilliant actors. Kinza Hashmi. I've seen lesser of her acting. Okay. So I don't know if she needs improvement or not, but I'm sure she's doing well. Okay, lovely. Hani Amir. Okay, Yumna Zaidi. Of course. Ushna Shah. I mean, you've named the wrong. You have the wrong list. Wrong list? Oh no, we should have added some more names then. Yes. And the last one is Yale. Okay, so all happy plushies. Of you course. Think no room for improvement? No, of course. Of course. Because every actor has a different craft. और हर actor अपना एक different genre बहुत अच्छे से perform करता है. You're right. So I think maybe I also need a lot of practice in life. I think we all need some improvement, and that is a process. And I that think we all should be encouraging our actors. True. Instead of telling me, आपको बेहतर acting करनी चाहिए. That is right. So now it is time for our next segment, which is called the Gen Z lingo. Okay. Zira, मुझे लगता है I'm gonna fail because I don't know दुनिया में क्या हो रहा है अभी. Okay, we are excited to find out what you know and what you don't. इस सेगमेंट में ये है कि मैं आपको कुछ Gen Z words बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि उनका मतलब क्या है. अच्छा. Got it? ठीक है. Okay. So first word is flexing on them. Showing off. Wow, that's great. Okay. Yes, very nice. अच्छा. So JOMO. What? JOMO. JOMO. English और उर्दू है? English. JOMO जो मुंह में आया बोल दो. अच्छा नहीं, I don't know. So JOMO is joy of missing out. Like fear of missing out. Oh my, this is so bad. I think they can do better. You guys can do better. What is JOMO? बोलते हुए भी it's so bad. That's the Gen Z lingo. You have to get around to it. Savage. Savage. Revenge? No. I don't know. Classy maybe. क्या है फिर? Savage is something like fearless and carefree and all chill and cool. Oh, okay. So it's actually the opposite of classy. Acha, glow up. Glow up. Glam. Matlab yes. Sort of. Yeah, sort of. Dressed up. Yeah. Kind of. I look marks. Good. Yeah. So like you glowed up. So like you were one version and then you like. This is so bad. This is so bad. Acha, next one is Delulu. Delulu. अपनी दुनिया में? Yeah, I mean basically, yeah, delusional. Delulu is delusional. दुनिया में. Yeah, so delusional in their own world. How do they even use it in phrase? Delulu is Delulu. Delusional being. Yeah, but वो कैसे rephrase करते हैं present tense में? Yeah, I'm in Delulu. हाँ, I'm Delulu. This is so Delulu. I love being Delulu. I hi. Said I hi. अच्छा, ghost. Ghosting वो होता है ना कि आप किसी की privacy को invade कर रहे हैं. No? What's ghost? Ghosting means to stop communicating. What? These reactions I'm dying So for. bad. Dude, matlab ghosting as in like she I ghosted me. reject Gen Z right now. We have been crossed off Yes. of Sirha's list. Yes. Matlab ghosting is like if somebody hasn't responded to you in very long. Oh, she ghosted अच्छा, me. are you ghosting me? She ghosted me. Okay. Acha. Okay, so there's still so much more that I want to find out about you. So we're Okay. going to go back to our questions, right? Okay. Sirha,
अगर आपको कोई जेंजी वर्ड अपने आप को डिस्क्राइब करके यूज करना हो, पहले पता तो वो जेंजी वर्ड क्या है. So from the words we use, I think delulu is better. Delusional, right? Yes. In your own word. I am delulu. I am delulu. अच्छा, और एक वर्ड जो आपके पास्ट को डिफाइन करता हो. इसमें से कोई है. इसमें से और whatever, if you know any other Gen Z word. I think savage. Savage? Yes. Ruthless. Yes. Carefree. Oh, okay. How do you define a green flag in a relationship? And if you do, what is the ideal example? अच्छा, ग्रीन फ्लैग मुझे लगता है रिलेशनशिप में एक ही होता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए. Very माइंडसेट तो आपके, चलो वो आप बाद में देखते हो मिलते हैं कि नहीं मिलते, बट आई थिंक फर्स्ट थिंग जो होती है वो बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वो फिर आप बाद में देखो मेरा बिल भर रहा है नहीं भर रहा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऑन द टॉप. इवन आफ्टर मैरिज आई थिंक रिस्पेक्ट, आपको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज ऑन द टॉप. सो डू यू प्रेफर स्टेइंग इन और गोइंग आउट? डिपेंड्स. अगर रेहान बहुत ज़्यादा तंग करता है तो वी हैव टू गो आउट, और वो फिर डेली रूटीन में होता है कि उमर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस, फिर हम उसको बाहर लेके जाते हैं कि अल्लाह का वास्ते तुम सो जाओ अब. वो बाहर जाके लाइक व्हाट, बिकॉज ही नीड्स टू लाइक टेक आउट हिज एनर्जी समवेयर. वो घर में तो निकाल लेता है, वो बाहर भी जाके, बट ही नीड्स मोर एनर्जी रियली कि वो निकल जाए कहीं. ओह वाओ. तो वो बाहर से थक के सारा कुछ करके वापस तभी घर माशाल्लाह नहीं थकता, बट I we try our best. Cute. So what is Sirha's favorite place to hang out with her friends? With friends, I like, should I name a restaurant? Yeah. Sure, whatever. I like Chatterbox. You like Chatterbox? Yeah, food is good. Food Yeah. is always great. No, the only good thing is कि उनके पास एक bread basket होती है जो free होती है. The reason why we So go there. Sirha goes to Chatterbox for the free bread basket. Yes. बातें तो चलती रहेंगी Sirha, but it is time for a quick rapid fire round. I'm going to ask you a couple of questions और आपने जल्दी मुझे जवाब देना. ठीक है. सही है? Ready? Okay. The most used app on your phone? Instagram. Last song you listen to? तुम मेरे हो. The nickname that your husband has given you? None. Nothing? No. Cute. Okay. Smartwatch or just being smart? Just being smart. Lovely. If you could eliminate one chore from your life forever, what would it be? Washing clothes. What would your silly weakness be if you were a superhero? Silly weakness. I would just tell out secrets to everyone. You would tell everyone? Yes. कि इसमें तुम्हारे साथ ये क्या था, इसमें तुम्हारे साथ ये क्या. Oh, that would be incredible. हाँ. Okay. प्यार के सदके या आखिर कब तक? प्यार के सदके. All right, guys, that was fun. Now I have a couple of more questions because I really want to know about your versatility. I really want to find out, right? आपके shoots में काफी funny scenes या sequences होते होंगे. आप कुछ funny moment हमारे audience के साथ share करना चाहेंगे? फनी होते होंगे, मुझे लगता है कि याद नहीं रहते, बट मुझे याद करने दें कि शायद कुछ कभी फ़नी हुआ. मुझे याद है हम बहुत पहले कुछ शूट कर रहे थे और वो एक डायरेक्टर थे, अब ही इज़ नॉट अलाइव एनीमोर, बट उनके साथ हम बहुत मस्ती करते थे. जैसे किसी एक्टर को छेड़ के एंड देन उससे कहते थे कि अब तुम्हें तो ट्रीट देनी पड़ेगी हमें. Okay. उनको पूरे सेट को ट्रीट देनी पड़ती थी. So we used to do these kind of मस्तीज on set. Alright. कुछ इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि मैं गिर गई. हाँ, एक दफा मेरे पर लाइट गिर गई थी. Oh no. कीनो फ्लो वो हुआ था, but it's not funny. I mean उस वक्त तो होता है, पर बाद में when you think about it you're like, हाँ, वो कीनो फ्लो गिर गई मेरे पर. Okay, so if you weren't an actress, what would you be? If you, like, I want to know if you have any hidden talents. I think मैं कुछ बेसिक जॉब कर रही होती. I would be like a 9 to 5. Yeah, not a 9 to 5. फ्रीलांसर होती मैं, वीडियो एडिट्स कर रही होती क्लाइंट्स के लिए एक्चुअली. Also like management सॉर्ट कर रही होती. कोई ऐसा co-star जिनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि you were like, wow, this is one experience I'll never forget. Yumna Zaidi, of course. I can imagine. Yes. Of course. All right. अच्छा. What kind of content do you get the most love on? Dance shoots, styling videos, couple content, baby content? I think जब मैं उमर को डांस करवाती हूँ, हाँ, तब व्यूज ज्यादा आते हैं. Really? So I make sure I make him dance once a while. वीडियो में कहीं ना कहीं उनको डांस प्लीज करवा तुम कर लो दिया डांस, प्लीज तुम कर लो डांस. अच्छा, कभी कोई फैन एनकाउंटर या मैसेज मिला हो जो बहुत ज्यादा स्पेशल लगा हो? आई डोंट नो, मुझे तो हमेशा ऑकवर्ड मिलते हैं. Really? तो मुझे आके मुझसे बहुत लंबी दास्तान पूछने लग जाता है कि आप ऐसी क्यों हैं और आपने बच्चे को स्कूल भेजा नहीं भेजा. दे कम एंड दे टॉक टू मी लाइक मैं उनकी रिश्तेदार हूँ. पूछते हैं कि आप इतनी स्लिम कैसे हैं बच्चे के बाद. लाइक ऑलवेज ऑकवर्ड. सो कोई मेरे पास आता है ना, मैं थोड़ा डर जाती हूँ कि अब ये क्या. अब पूछेंगे कि क्यों स्लिम है बच्चे के बाद. सब पूछने के बाद उनका एक सवाल होता है
कि आपका नाम क्या है, बिकॉज नाम नहीं उनसे प्रोनाउंस होता। सब बातें कर ली, खानदान के बारे में पूछ लिया, मियाँ के बारे में पूछ लिया, बच्चे के बारे में पूछ लिया, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है सर? एग्जैक्टली। फिर मुझे 3 दफा एक्चुअली बताना पड़ता है कि मेरा ये नाम है। Okay, so what's the right pronunciation of your name? सरहा। Sarha. Yes. Okay, so now you guys know. आप लोगों को अब पता चल गया कि it's Sarha. Yes. Please उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है। अच्छा, what is the most main character moment that you've had in your life, recently or ever? Main character moment. How, where you felt like, okay, wow, I am the boss. I feel incredible, and this is my moment. Think about it. On set or not on Kabhi set? bhi, anywhere in your life, personal life, professional life, I think anywhere. after baby hitting gym is the moment you feel कि हाँ भाई, this is the right thing you're doing in life. Yeah. Yes. So like losing all the baby weight Yes. and coming back to your Gym जाना after like having a baby. having a baby is the best thing. Wow. Because अच्छा. वो सारा गुस्सा आप लोगों का निकाल लेते हैं ना, जो आपको टोट के दे रहे होते हैं पहले कि बच्चे को ऐसे संभालो ऐसे संभालो, वो सारा गुस्सा आप जिम में So निकालते हैं। unneeded opinions Yes. and advice जाके जिम में निकलते। बिल्कुल। सिरहा को अगर किसी एक्ट्रेस से लाइव स्वैप करनी होती तो वो कौन होती और क्यों? लाइफ स्वैप करनी होती। I think I would do it with Mansha. Mansha. And what is the first thing you would do as Mansha? I just open the wardrobe. You love her wardrobe. I love the and I love dressing up as well. So I need colors, I need heels, I need shoes. So I think Mansha and I have like kind of similar wardrobe feels. So the first thing I'll do is open her wardrobe. Okay, lovely. अच्छा, the thing is, अगर आपको एक दिन के लिए एक दिन ऐसा मिले जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, you have no responsibilities, no work, no chores, nothing. How would Sirha spend her day? I think आजकल मैं सिर्फ सोफे पे लेटी रहूंगी because I want that day कि मैं कुछ ना करूँ, इहान भी मेरे पास ना आए, वो ऐसे करके ना उठाए, मामा मामा ना करे, so बस मैं लेटी रहूँ, कुछ ना करूँ, मैं टीवी भी ना देखूँ, I'll just watch the ceiling, बस. So Sirha's ideal day is just lying on top of the sofa and wow, incredible. Yes. So as we move on to our last segment, मैं जल्दी से साइमा को बुलाऊंगी ताकि वो मेरा हेयर स्टाइल इवॉल्व कर ले. साइमा, वेलकम बैक. थैंक यू. अच्छा, हमने बाल इवॉल्व कर. The evolved hairstyle. Thank you so much, Saima. I love my hair. Thank you. Bye. Okay, guys. So now it is time for our next segment, which is called the gaming segment, and it is also our last segment of the day. Sir, are you ready? Yes. Let's go. Okay, so this segment is called What's in the Box. Sir, I don't know if you know what this game is, but let me tell you. ये हमारा बॉक्स है. इसके अंदर हमने कुछ रखा हुआ है जो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है. इसके साथ दो आपको होल्स मिलेंगे. You have to go in and check, see and feel and I don't feel like okay, so मुझे उल्टी ना हो जाए यार सेट पे. ये क्या यार? नहीं, इसी दो में गंदी सी दो में ना, पता नहीं. I don't want to touch, but it's some reptile के खानदान का कुछ है, मैं नहीं टच कर रही. हाँ, निकाल. Yes, please. अच्छा, whatever it is, इसको स्किन केयर की बहुत जरूरत है. अच्छा, अल्लाह मियाँ, ये रियल नहीं है, ठीक है? ओके, ये रियल नहीं है. ये क्या ये रियल नहीं है, रियल नहीं है. Wait, रियल नहीं है. डायरेक्ट समंदर से उठा के ले आए हो. रियल नहीं है. या पर what it is, it's मैं so. अपने आप को बता रही हूँ. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद मुझे कुछ हाथ लगाने को दिल नहीं करना तो पड़ेगा. सी, दिस इज द गेम. अब नेक्स्ट जो चीज है वो आप खुद ही देखते हैं. क्या है? क्या है? मुझे तो नहीं याद लगाना. तुम लोग बहुत like you guys, I've seen better what's in the box.
करीब हूँ। I'm not touching. It's something गोल गोल। गोल गोल तो है। हाँ अब मैंने नहीं हाथ लगाना, अब मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। पक्का? हाँ भाई निकाल लूं? या प्लीज। बहुत ही गंदी सी चीज है। कहाँ से मरे हुए? Okay fine. It's actually just Play-Doh. Yeah, but It is literally just Play-Doh. by the first attempt, I don't want to touch anything I else. know. Okay guys, next. She's a good sport. Now back to box number 3. अच्छा ठीक है। Okay, Sarah, you can do this. I know. ये कोई दरख्त है? हाँ. It's cactus. No. It's just normal दरख्त. हाँ, good. Good. There you go. See? दो शदीद horror attempts के बाद एक good attempt. Yeah. Good First job. one was a horror one, I think. First one was actually horror. Second इतना horror था नहीं जितना आपको बन लगा. गया. But this was a great attempt. And this brings us to an end of this amazing episode. I hope आप लोगों को मजा आया होगा. Thank you so much, Sarah. Thank you. मैं आपके साथ बहुत मजा आया. आपकी एनर्जी हमने बहुत enjoy की. And I hope you guys liked this episode as well. अगर कोई comments हैं तो हमें नीचे बताना नहीं भूलिएगा. I will see you guys for another fun episode of Sunsilk Presents Girls Only very soon. Until then, Allah Hafiz.